Uniformly accelerated motion. Acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time in a given direction. The SI units of acceleration are meter per second square. This would mean that if an object has an acceleration of 1 meter per second, इसका क्या मतलब है? It will increase its velocity in a given direction 1 meter per second every second. 1 एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि हर सेकंड बाद उसकी जो स्पीड है वो 1 से इंक्रीज कर रही है। पहले मेरी गाड़ी की स्पीड 40 थी, अगले सेकंड में 41 हुई, अगले सेकंड में 42 हुई, फिर उससे अगले सेकंड में 43 हुई। इसका क्या मतलब है? माय कार्स एक्सेलरेशन इज 1। तब क्या होगा? लेट्स से अगर मैं 40 पे ड्राइव कर रहा हूँ एंड द स्पीड ऑफ माय कार इज 40 एंड द एक्सेलरेशन इज 3, व्हाट वुड हैपन? आफ्टर एवरी सेकंड माय कार स्पीड वुड बी 40, देन आफ्टर 1 second it would be 43, after 1 second again it would be 46, then after another second it would be 49। हर सेकंड में 3 का डिफरेंस आ रहा है, showing that it is accelerating। what is happening when it is increasing every second? इसका मतलब है that the acceleration is constant, क्योंकि स्पीड जो है वो इक्वल इंटरवल से इंक्रीज हो रही है। हर 1 सेकंड के बाद there's an equal difference, let's say 40 के बाद 42 हुआ, फिर 44 हुआ। अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, and over here there's also a difference of 2, which means that the acceleration is constant. This means that the velocity is varying with respect to time, and we see this by another formula, which is v minus u over t, which we also use to calculate acceleration. It means if an object is held stationary in a uniform gravitational field, when it is released, it will fall, and it will do so with a uniform acceleration। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलीज कर दें, वो गिरेगा, लेकिन acceleration उसकी सेम होगी। Near the surface of the earth, the acceleration is approximately 9.8 meter per second। इसका क्या मतलब है? Again, I'll repeat. This means that every second that the object falls, its velocity will increase by 9.8 meter per second। So let's check your understanding again। उस सूरत में क्या होगा? What happens if the object is thrown up? We've been talking about free fall. What if we throwing an object upwards? What will happen now? अब इसके अंदर एक चीज नोटिस करें, whenever we throw something upwards, we are going against the gravity। We are going against the gravity। And what happens if an object is thrown up? The acceleration would still be downward। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं, एक्सेलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है, बिकॉज द ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ओनली द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, और एक में ऊपर है, एक में नीचे है। Only the direction of the object is changed, but the gravitational force always acts downward, which means that the acceleration in both the cases, either the object is going upwards or it is going downwards, the acceleration would also act downwards always। If an object is thrown up with an initial velocity of 30 meter per second, after 1 second, it will only be going 20 meter per second up. After 2 seconds, it will only be going 10 meter per second, and after 3 seconds, the object will have zero velocity। क्या मतलब है इसका? लेट्स से हमें पता है दैट द एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, या अभी हम फिलहाल इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड्स एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, स्पीड कैसे चेंज होगी? स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड वुड बी द सेम, ओनली द डायरेक्शन इज डिफरेंट। व्हेन इट्स गोइंग अपवर्ड्स, चलिए पहले डाउनवर्ड्स की बात करते हैं। व्हेन इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स वो क्या होगा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। After 4 seconds, हर सेकंड बाद क्या हो रहा है? It is increasing from 10 to 20, then from 20 to 30, then from 30 to 40। अगर upwards जा रहे तो क्या होगा? 40 से फेंका, after 1 second decrease by 30, after 1 second decrease by 20, after 1 second decrease by 10। एक्सेलरेशन तो सेम है, यहाँ पे भी 10 थी, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। एक्सेलरेशन इज सेम as well when we having a free fall downwards, and when we throwing the object upwards as well, तब भी acceleration is the same। velocity भी same है, velocity का change भी same है, the rate of change of velocity is also the same। what is different? The direction is different। time भी same है, time interval is also the same, the speed is increasing or decreasing in 1 second। the only difference is the direction। while going upwards, the object will decelerate by 9.8, and when going downwards, the object will accelerate by 9.8। simple। An experiment with G. You can also prove this G with an example, but first you need to understand the object or the concept of free fall, terminal velocity, and what happens
And what's the difference when we're throwing an object downwards and when you're throwing an object upwards?